I'm Radhika Garg. I hope you are all doing good. I'm also doing good. So, in this session, we are going to discuss about the preamble. Okay, that is which is mostly be seen on the front page or the starting the few pages of the all NCERT books which you have gone through. So, we are going to through with this. Before starting the session, I would like to share one quote, that is, the art of leadership is saying no instead of saying yes, because saying yes, it is very easy. So I want to say do this on this that I want to reflect you all that you should start saying no to all those things, people and places which affect or affecting or act as a hurdle in your journey to achieve your goals, whatever it is your goals, whether it is your health goal, mental health or physical health, or your in regarding to your being in your professional career, whatever, or your working career, whatever it is. So stick to your plans and working hard towards them. So let's start the session. This is, I hope my screen is visible to you all. That is, this is the Constitution of India, which available on the site of the, you can also download it. Then here's a preamble. That is, we are going to read it out. We the people of India have solemnly resolved, to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality, status में and opportunities में. Inequality in status, that all people are equal in status. There is no hierarchical status. Okay, and then opportunity, and promote among them all. Equality should be promoted among them all, that we should also treat others as equal as ours, or a vertical level, or a horizontal level. Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, the 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves the Constitution. That is 26 November 1949. So, in this, there are three words which has been came from the amendment. That is, okay. That is integrity, socialist, secular, and integrity and unity. That is integrity. Okay, that is where the three words has been came from the 42nd Constitution Amendment 1976. Okay, so we are going to discuss each word and its importance and its definition, so we can able to understand what does this preamble means. So before starting that, you should need to know this preamble. The word preamble, it is first written in the United States of America Constitution. The word which has been first time used in it, and the preamble, it is also written in the United States of America Constitution. From there, India has chosen to has its own preamble for the purpose of for framing our Constitution. On this here, we need to understand that preamble is the summary of the Constitution. Why it is called the summary of the Constitution? Because when the Constitution of India has been framing by the Constituent Assembly, the preamble has been adopted at the end of the entire Constitution has been framed. That's why it is known as a summary of the Constitution. It has never been adopted first. It has been adopted at the end. While in case of the United States of America, it has been adopted initially, then the whole Constitution has been written after the preamble has been adopted. There's a major difference between this, because preamble is the key to open the minds of our forefathers, which
able to understand us what kind of Bharat or India they wanted to become, or they wanted, or dreamt of it, and what they had made of it. तो इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्या सोचा था और हमने क्या कर लिया. दैट इज देयर इज अ, उसमें कोई गैप तो नहीं रखे, देयर इज नो गैप बिटवीन इट, और देयर नो लूप्स इन इट to align it what we have dreamt and what we have made. It is both are aligned or not. That is. Secondly, that is, it is also known as the identity card of the Constitution as well, because it is always written on the face of the preamble. Face of the Constitution. That's why. Now, start. Preamble has 4 elements or 4 ingredients. You can say that. Preamble पे 4 key ingredients है. की 4 इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास इसमें. व्हाट आर दे? फर्स्ट, सोर्स ऑफ पावर, फ्रॉम वेयर वी ड्राइव आवर पावर. पावर कौन देता है हमें? दैट टू गवर्न आर पीपल ऑफ इंडिया. पीपल ऑफ इंडिया को गवर्न करने की पावर किसके पास है? हु आर गिविंग आवर अथॉरिटी, और फ्रॉम वेयर वी आर ड्राइविंग इट्स आर पावर. सेकेंड, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट. इंडिया कैसा होगा? Third, that is objectives of Constitution. That is I already said that forefathers, what with they come to when they adopting the preamble at the end of the frame of the Constitution, they wanted to conclude that what we had dreamt and what we had made, there should not be any gap between it. We should, even if there's gap, we should bridge it. कि हमने क्या सोचा था कैसा भारत होना चाहिए और क्या कैसा भारत बनाया है, इस दोनों को हम मेजर करें. तो what are the objectives of Constitution is enshrined in it. Next one, fourth, date of enactment or date of adoption of Constitution. Okay. तो the source of power. The source of power, from where we derive the power. The power we derive from it itself written in the preamble that the power it is derived from the people of India. It derived from the people of India. Whatever the authority to govern all the Indian citizens is imbibed or internalized in themselves. They have the right to give, they want to govern by themselves. They give the right that we should be governed by themselves. है ना? We should be governed by our elected representatives, or we should give the authority to all those elected representatives that they should frame laws and enforce them for our betterment and benefits के लिए and development and growth के लिए of the Indian. तो the power lies in the people of India. What is the people of India? What does it mean, the people of India? The people of India, all the people of any of the state, it means that they born and brought up in that a country, and they claim their ownership over it and belonging to a particular place. People of India are people of any of the state or a country. What does it mean? It means it derives from the concept of autochthony, which means claiming the sense of ownership or belonging to a particular place. That we belong to this place, we are owning this place belongs to us, so we are governed. We have the right to govern this place. Nobody else has giving the right to govern that. We have the political rights, civil rights, economical rights, all those rights we have. We have a right to self-determination and self-controlled resources. We are controlling all those resources for our betterment and development and growth, and we are self-determined. No other person is going to govern us over it. We are giving that authority. And we have a legitimate claims over all those land resources, air, water, and whatever the resources are available in our atmosphere or in our surrounding. That is, these are only be governed by our original inhabitants. So the people of India drives the authority, gives the authority to govern themselves. That is the people of, that is the first source. तो पावर कहाँ से आ रही है? पावर आ रही है आपके लोगों से, जो लोग इस देश को
में रहते हैं, उस देश के लिए काम करते हैं, इस देश के लिए ही those who are working for it, those who are belonging to this, those who are original inhabitants or natives of this country, these are the citizens of the country. Okay, that's why you also understand that the president should be the elected head. Elected head होता है हमारे स्टेट का, that we are giving the power to our elected head that you should govern us. After this we are going to discuss what are the nature of the Indian state. नेचर कैसा होना चाहिए इंडियन स्टेट यानी इंडिया, भारत कैसा होना चाहिए, भारत कैसा होगा, दैट इज सोशलिस्ट होना चाहिए, सोविनियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक होना चाहिए हमारा भारत। हमारा भारत कैसा होगा, सोविन होना चाहिए, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोविन, व्हाट डज इट मीन द वर्ड सोविन? सोविन मीन्स सुप्रीम अथॉरिटी ओवर द टेरिटरी एंड इट्स boundaries are all this and its people, yani all those authority lies within its people or in its territory. It implies that India is to be governed by self rule Swaraj, that is self rule, self independent hai, that is independent state hai. India is an independent, sovereign means India is an independent state, it governed by itself, self determined government hogi uski. India इज नीदर डिपेंडेंसी नहीं होगी किसी और स्टेट पर, ना ही डोमिनेंट होगा किसी स्टेट का और अदर इसका। डोमिनेंट मीन्स देयर इज अ अदर अथॉरिटी हु इज गवर्निंग अस विच इज अबव फ्रॉम अस, बट बाय गिविंग आर सेल्फ अ सेल्फ रूल. That is just like, for example, I am giving it to, that is while the British are ruling India, they wanted to initial stages of our independence stage, they wanted to give us the dominant status. Dominant status, it means that the British crown has the ultimate authority or the sovereignty over ourselves, but we are also given our right to self-determine inside the British crown, not outside it, inside. Whatever we are doing, we are held accountable to the British crown. That is the dominant. So India neither a dependent nor a dominant state. India is an independent state. India decide what we want to do and how we want to do. It's India's decision. Nobody else is going to take its decision. That is. So there are two types of sovereignty: external sovereignty and internal sovereignty. External sovereignty means that India has a freedom to be a part of any of the organization or agencies or enter any other treaty, agreement, contract outside the states. States here I am referring to the countries. Outside the country, अपनी कंट्री के बाहर किसी और कंट्रीज के साथ हम किसी भी तरीके के अग्रीमेंट में, ट्रीटी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर एजेंसी के बन सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा लीगल अरेंजमेंट विच डजेंट अफेक्ट आवर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, आवर पावर ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, है ना. ये हमारी जो सुप्रीम अथॉरिटी है हमें खुद को रूल करने की, और जो हमारी टेरिटोरियल बाउंड्रीज वगैरह, इन सब चीज़ों को अफेक्ट नहीं करेगा. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ एक्स्ट्रा लीगल अरेंजमेंट. इंडिया हैज़ इट्स ओन वॉल्यूशन टू एक्सेप्ट, to deny or to change or to modify any of the terms and condition on the basis of it to India become a part of any other organization or agencies, or to enter into a contract or a treaty with any other state, organization, agencies or countries के साथ. तो दैट इज़ द सोवरेनिटी. सोवरेनिटी मीन्स हमारा राइट है, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटीज़ पर, हमारे लोगों पर हमारा राइट है. हम कैसे गवर्न करना चाहेंगे वो हम सोचते हैं, और हमारी क्या पॉलिसीज़ होंगी, हमारे क्या वे, व्हाट आर द वेज एंड मेथड्स वी आर यूजिंग टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल, दैट इज ऑल्सो बी गवर्न बाय अस. नो अदर पर्सन हैज़ गवर्न ऑन आर बिहाफ. हमारे बिहाफ पे कोई और नहीं करेगा. दैट इज सेकेंड. इट इज इंटरनल सोवरेनिटी. इंटरनल सोवरेनिटी मीन्स दैट स्टेट हैज द पावर to make its own laws, internal laws, and enforce them and enact them on the people of India or within its territory, not outside. It doesn't mean कि भाई इंटरनल सोवरेनिटी हमने लॉज बना लिए और हमारे जो लॉज वगैरह एनफोर्स के हम बाहर की कंट्रीज पे लगा रहे हैं. नो, वी डोंट हैव दैट. सोवरेनिटी मीन्स वी अदर्स आर रेस्पेक्टिंग आवर बाउंड्रीज एंड वी आर रेस्पेक्टिंग अदर बाउंड्रीज एज वेल. We are not encroaching others' boundaries or not allowing others also to encroach our boundaries. Neither in terms of territorial and neither in terms of our people rights, political, either civil or economic rights. So that is the meaning of the sovereignty, that we are governing or we are making or we have the power to make our own laws and enforce those laws within our territory. It is the right of the state to govern its
ओन पीपल एंड कंट्रोल इट्स ओन टेरिटरी। हमारे पास राइट है कि हम अपने लोगों को कैसे गवर्न करते हैं, उनके अंदर किस स्टेप से नॉलेज एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं, है ना, उनको लॉज वगैरह के अंदर में वी आर बाइंडिंग देम और कन्फाइनिंग देम इन द अंडर द लॉज एंड स्टैचुएट्स, and we are giving them rights and duties towards the nation and how we are protecting our own territory. That is sovereign. Next word is socialist. So what do you, I hope you getting try a guess about this word socialist. Okay, now let's start with word socialist. Socialist word, firstly you need to understand that the word socialist, it has been entered or it has been written by amending the preamble by 42nd Constitutional Amendment Act 1976. The word has been inserted in the preamble. It has not been inserted in the at the initial stages or the initial time when the constitution has been framed. उस वक्त ये word add नहीं था. इस word को 42nd Amendment Constitution 1976 से लेके आया गया है. The word socialist. Okay. So now we are going to discuss about it. Why we had written word? So why we have mentioned this word in our preamble, which is not mentioned in our initial or the original constitution. When it is not mentioned in the original constitution, so why we had, and what does that word mean? So we are going to understand it. First, we need to understand that what does the word socialism means. There are two types of socialism. Okay, just give me a minute. Add page. Okay. Okay. The word socialism. First, we need to understand what is the term socialism. Socialism is of two. And we are going to understand the socialism Marxist and Gandhian socialism. The socialism word we need to understand in terms of two theories, that is Marxist theory and Gandhiji theory. That is Marxist. What does Marxist? Marxist का कहना था socialism में that based on the principle of class struggle. Marxist जो socialism है, it is based on the principle of class struggle and revolution. प्रिंसिपल ऑफ क्लास के स्ट्रगल पर और उसको रिवॉल्यूशन। मार्क्सिस्ट का कहना था दैट ही बिलीव्ड दैट द सोशलिस्ट कैन ओनली बी, सोशलिस्ट मीन्स that all have equal resources and all the resources we combined them and all these resources should be equally distributed among all the people of that state. मार्क्स ये कहते थे कि भाई जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास कलेक्टिव कर लो, उन सबको इकट्ठा कर लो, सब में इक्वली बांट दो। और इक्वली बांटने के बाद क्या करो, दे हैव देयर ओन कॉन्शियसनेस, दे आर नॉट एनक्रोचिंग और दे आर नॉट स्नैचिंग ईच अदर रिसोर्सेज, दे आर कॉन्शियसली अवेयर दैट वी शुड यूज आर रिसोर्सेज। कि भाई ऐसा लगता था कि भाई लोग इतने दे आर वेल इफ कॉन्शियस एंड दे आर इंटेलेक्चुअल हाई इनफ दैट दे आर नॉट स्नैचिंग ईच अदर रिसोर्सेज और ट्राइंग टू ट्रिक ईच अदर्स फॉर गेटिंग ईच अदर रिसोर्सेज। तो ये ऐसे टाइप की सोसाइटी मेंटेन रहेगी। तो उसका मानना था कि भाई ये जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, दोज हु आर कैपिटलिस्ट, जिनके पास पूंजीपति कहते हैं, जिनके पास पैसे होंगे, वो क्या है इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, फैक्ट्री वगैरह सेटअप करते हैं, उन फैक्ट्री में जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उन्हें एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उनसे काम करवाते हैं। तो उसने क्या कहा, अगर सबको रिसोर्सेज चाहिए, नहीं सबको इक्वल स्टेज पे लेके आना है, सोसाइटी शुड भी इस टाइप की होनी चाहिए दैट इज सब ऑल आर इक्वल, देयर इज नो डिफरेंस और देयर इज नो गैप बिटवीन देम। तो ही बिलीव दैट तो फॉर दिस पर्पज टू अचीविंग दिस काइंड ऑफ इक्वल स्ट्रेचर सोसाइटी वेयर nobody is higher than anyone else,
each one has a on their equal stage, all are on horizontal axis. It is, तो he believed that कि socialist achieve करने के that one you should throw the capitalist को throw करो, तो सब जो working class है वो सब एकजुट हो जाओ, they are united and initiate a revolt against the capitalist class so that we will get them all their resources. So they have to put down all their resources in the resource pool and all these resources has been taken and distributed among themselves. सब में बांट दिए जाएं इक्वली, तो सोशलिस्ट सोसाइटी अचीव हो जाएगी. और ये क्या होती है, इस टाइप की सोसाइटी उन्होंने जो बताई वो स्टेटलेस, तो हमें किसी भी गवर्निंग अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्टेटलेस हो जाएगी हमारी सोसाइटी, स्टेटलेस एंड क्लासलेस हो जाएगी. क्लासलेस कि भाई सब इतने कॉन्शियस हैं, उन्हें किसी गवर्निंग अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सब इक्वल स्टेचर पे आ जाएंगे. पर लेकिन इनका मेन क्या यूज़ करते थे, रिवॉल्यूशन. गांधी जी भी यही चाहते थे, लेकिन बट उनका क्या था, यूजिंग नॉन वायलेंस. वायलेंस यूज़ नहीं होना चाहिए, नॉन वायलेंस. उनका मानना था ये अचीव किया सकता है बाय ओनली एजुकेशन एंड परसुएशन पॉलिसीज, कि उन्हें लोगों को एजुकेट करो, लोगों को एक दूसरे को परसुएट करें, तो एक दूसरे को समझाएं, अंडरस्टैंडिंग लेके आए एक दूसरे में, तो सो दैट वी कैन अचीव अ स्टेट ऑफ इक्वलेबल सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज and many other things. But here should be no stateless. There should be a state. A state must be present. That there should be a governing authority who will govern that they all the resources should be equally available to all the resources are available for all the individuals for the purpose of their development and growth के लिए, कि भाई सारे जो resources हैं वो सभी के लिए equally level पे available हैं उनके growth and development के लिए. किसी को हाँ देर इज अ डिफरेंस ऑन द बेस ऑफ, बट लेकिन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, द अथॉरिटी विच हैज़ बीन फ्रेम्ड बाय अस के द्वारा, जो हमारे द्वारा फ्रेम की गई है, उसकी अथॉरिटी होगी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, class, creed, religion, sex and gender. Irrespective of them, we are giving them all those people to equal opportunity to get growth, to get of the individual growth and the nation growth में वो contribute कर सकें. तो that is, there are the two ideology, that is socialism means that कि भाई सबके पास equal resources हो, किसी भी तरीके का difference ना हो. तो क्या हमारे पास अगर हमें ये word add किया when we had, so India at the time of the framing of the constitution has chosen the word Gandhian socialism, है ना, Gandhi socialism. We adopted the Gandhiji socialism in which we are using all non-violence and the principle of, which is based on the principle of that, based on the principle of non-violence. We are using the non-violence, self-reliance and decentralization of the power. That is, there is no kind of violence in it. Self-reliance कि भाई सब एक self-reliance, that we are self-sufficient, we are making all of those things on the basis of our own capabilities. We are generating our own capabilities. We are not depending on any other person. We are generating our, that is self-reliance and decentralization, that the power has been decentralized from the higher hierarchy to the lower part of that all the bottom lines people are also with participation in the management and the administration, so that they can understand it and help us to maintain a society, equal society as well. It emphasizes on the importance of the individual freedom, that individual has a freedom. Individual should not be denied of their growth and development on the basis of their any of the religion, caste, gender. On the basis of that, individual has the proper availability of the resources for their growth, personal growth and development, and as well for the purpose of making the contribution in the national development. There should be a social harmony. It believes that socialism can be achieved through a peaceful means of, that is, education and persuasion. When we educate people, when we persuade people to achieve the higher goals, this help us to maintain the this help us to maintain a society with high levels of equality, where all the people are living in social harmony and unity and integrity. साथ जहाँ पे सभी लोग एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके सोशल हार्मनी के साथ में रहेंगे. दैट इज द सोशलिस्ट गांधीन सोशलिज्म वी अडॉप्टेड. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. फर्स्ट दैट इज आई हैव डिस्क्राइब्ड, दैट इज व्हाट इज
सोशलिज्म वी अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ द मार्क्सिस्ट थ्योरी एंड गांधीयन थ्योरी. मार्क्सिस्ट क्या कहता था? मार्क्सिस्ट कहता था जो भी करना है आपको बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल क्लास स्ट्रगल और रिवोल्यूशन करो, कि भाई कैपिटलिस्ट है, वर्किंग क्लास है, तो हमें क्या करना, स्टेटलेस और क्लासलेस. सबसे इंपॉर्टेंट काम था क्लासलेस सोसाइटी, कि भाई कुछ लोगों के पास रिसोर्स है, कुछ के पास नहीं है, तो क्या करो, जिनके पास नहीं है वो जिनके पास है उनके ऊपर उनके साथ रिवोल्ट करो और सभी रिसोर्सेज को कॉमन पूल में डालो और उन्हें आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो. तो एक तरीका ये है, इससे आप सोशलिस्ट यानी एक इक्वल सोसाइटी अचीव कर सकते हो. बट दिस कैन नॉट बी अचीव, दिस ओनली बी अचीव्ड बट कैन नॉट बी सस्टेन, बिकॉज ऑल यू नो द डार्विन थ्योरी, दैट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. As you think the people are conscious enough, they not enter into any kind of things like that. They are not trying to getting the other person resource for their own betterment and development के लिए. तो this kind of socialist cannot be achieved. But the Gandhiji socialism is that there should be a state who is the authority to govern that each one of them confining or do not confining in its own resources, do not trying to snatch the other ones. Okay, so that is how I described. Then India has adopted the Gandhian socialism, which is based on the principle of non-violence, self-reliance and decentralization पे था, जिनका मेन एम क्या था, भाई एजुकेशन और परसुएशन के थ्रू हम एक सोशलिस्ट सोसाइटी अचीव कर सकते हैं जिसमें सोशल हार्मनी होगी, यूनिटी होगी, इंटीग्रिटी. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग. नाउ आफ्टर दैट we are going to understand that in the socialist we adopted the mixed economy. There is a state ना, that I have told कि there is a state and classless. स्टेट होगा हमारे पास और क्लासलेस होगी, लेकिन यानी किसी भी तरीके का डिफरेंसेस नहीं होंगे हमारी सोसाइटी में, सोशल हार्मनी यूनिटी मेंटेन की जाएगी. स्टेट तो स्टेट है, तो यानी कुछ मेजर जो आइटम्स होंगे इट शुड बी मैनेज्ड. मेजर आइटम्स इट शुड बी मेजर आइटम्स जो भी होंगे, मेजर जो थिंग्स होंगी, इट शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट अथॉरिटीज और द सेंटर. वी कैन से दैट द गवर्निंग अथॉरिटी जो होगी, मेजर पार्ट जो होंगे हमारे वो गवर्निंग अथॉरिटी के पास होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल रेलवेज हो गया आपका, डिफेंस इक्विपमेंट हो गए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस का पूरा. देयर शुड बी देन से नेशनलाइज बैंक एंड इंडस्ट्रीज होंगी. तो this kind of socialism we adopted the mixed economy. तो इंडिया क्या था at the time of the framing of the constitution is mixed economy. But when this amendment has been made in the constitution, 42nd constitutional amendment 1976, it doesn't mean that India is not socialist. India जो था, India is socialist from the initial stages. इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें अगर वर्ड मेंशन भी नहीं था तब भी इंडिया की आइडियोलॉजी क्या थी, वी हैव लिबरल आइडियोलॉजी रिगार्डिंग दैट वी आर गोइंग टू अडॉप्ट द सोशलिज्म स्ट्रेटेजी, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी हम अडॉप्ट करेंगे. हम सोशलिज्म में जहाँ पे क्लासलेस भी होगा वहाँ स्टेट भी होगा, जो कि दोनों साथ मिलके काम करेंगे. वी हैव लिबरल आइडियोलॉजी थी हमारी कैपिटलिज्म की. तो many of the historians have said, many of the people that there is no need to add the socialist word in the constitution because India has already been a socialist country, even whether going to be mentioned this word or not, irrespective of adding this word in that. So that is the socialist. Okay, next we are going with secular. Secular. This word is also been added after the amendment of 42nd Constitutional Amendment Act 1976. This word is not originally mentioned in the Constitution of India. India has already been a spirit of being a secular state. So what does it mean and why it has been added? And when we are going to back in our back days or in our history, that we came to know that there is in Europe there is a Roman Catholic Church and there is a state or the king. There is a monarchical system and the church. The church has the issue of interfering all the state affairs of the king or the monarchy. So there is no diverse between their function. The Roman Church is affecting or interfering in all the affairs of the king, day-to-day administration of the states.
So when India is framing its constitution, it has already understand what are the problems and the issue has been created if state has a own religion और state has been participating in day to day administrative function में अगर state के religion अगर उसका part होगा, that has been creating a havoc because India is a diverse country which have multi diversity, religion diversity, linguistic diversity, we have ethical diversity, ethnical diversity, we have multiple diversities on, because if we are including the religion in our state performance or in the state activity, that will be debilitating effect on the country. So India has follows the policy of equidistance from all the religion, that our country has no state religion, just like for example Iran has a religion of मुस्लिम्स, मोहम्मद पाकिस्तान मोहम्मदन स्टेट है, इंडिया का कोई अपना खुद का एक रिलीजन नहीं है. इंडिया हैज़ मेंटेन द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन बट इन अ वॉचफुल एम्बियंस दैट बट वी आर मेंटेनिंग इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करें, लेकिन वी आर हैव अ वॉचफुल एम्बियंस दैट नो बडी इज गोइंग टू और नो अदर पर्सन इज हार्मिंग और creating disabilities on the basis of the religions के वजह. We accept and embrace all religions. We are following the policy of सर्व धर्मा संभव, that is गांधी जी आइडियोलॉजी. कि सभी धर्मों को हम इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज देंगे. We have no state religion. तो इंडिया believes in this spirit. तो that's why we have liberty of thought, expression, faith, believe and worship. You have written that is a word also mentioned, the liberty of thought है हमारे पास, एक्सप्रेशन, बिलीव है, फेथ है, वर्शिप है, हम किसी भी तरीके का अपनी मर्जी से जो हमें लग सकता है वो करते हैं. If someone is asking you that India is an anti-religion, no, India is not an anti-religion. It just India is maintaining equidistance from all religion. तो it doesn't mean कि इंडिया क्या है, एक anti-religion है. It is a positive kind of secularism we are following. We are following a positive kind of secularism because we are maintaining the equal distance from all religion. We are not following a negative kind of, that is negative kind of religion. It means that where the state has only a particular religion, no other person is allowed to follow other religions in that state, or even if they are allowed, but they in their public space they are not, in their private space they are not allowed in the public space. For example, East Pakistan, that is Bangladesh, has its own religion, the Mohammedan. They have the Muslim majority and they have following the state religion, that is they are Muslims. And Pakistan, that is also is Muslims, and Iran as well. And the France has the Christian religion, that is. तो इंडिया doesn't have any kind of religion. इंडिया का खुद का एक अपना religion नहीं है, लेकिन सभी से equal distance maintain करता है. तो for this, if you are saying that for the purpose of securing this feature of Constitution of India and do not allow that any person who is giving the authority to make laws, whether that they are making such kind of amendments or changes in the laws and statutes that will affect. So India has also introduced to frame some laws, that is IPC, Indian Penal Code था पहले, अब now it has been changed as भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल बन गया है, that is सुरक्षा एक्ट है. इसमें सेक्शन 298 है, stated that punishment for injury or defiling place of worship with the intent to insult the religion of any class, there should be a punishment in regarding that. और किसी भी तरीके का hatred या अगर आप disperse कर रहे हो, disseminate कर रहे हो on the basis of religion, there are punishment for that. तो for this BNS section, तो I am mentioning it here. BNS के section है 295, section 290, just give me 298, sorry, 295A, 298 and section 153A, 196, sorry, 196. Okay, these are. So if somebody is asking that why we had added this secular state, because in letter and spirit, without even mentioning this word, India is a secular state. India doesn't need to mention that we need to be a secular state, because at the time of framing of constitution, if we mention that word, so it means that India is following a particular religion policy. But India has its own, India has to make its own secularism. ओन सेकुलरिज्म में हमारा खुद का बनाया हुआ सेकुलरिज्म, दैट वी आर फॉलोइंग इक्वी डिस्टेंस. तो पीपल हैव सेइंग दैट
when the amendment has taken place, the India has already been the secular, and it has been its basic feature, which is already been shown by in articles 25 to 28, that is the fundamental rights article. इनमें आपको रिलीजन, आप अपनी पसंद का जो आपको पसंद है, अथीस्ट हो इट डजेंट मैटर, आप अपना फॉलो कर सकते हैं. तो इट डजेंट नीड टू रिक्वायर्ड कि भाई हमें सेकुलर वर्ड एड करना चाहिए था या आपको अमेंड करना चाहिए था और टू इंसर्ट दिस वर्ड इन द प्रीएम्बल. डजेंट मीन. तो सुभाष कश्यप सर कहते हैं दैट इज सेकुलरिज्म इज डिक्लेयर टू बी वन ऑफ द बेसिक फीचर था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ऑलरेडी आपको उसके आर्टिकल से पता चल जाएगा. दैट इज 25 to 28 में राइट टू रिलीजन दिया गया आपको. आप अपनी मर्जी का रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, विच इज बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट की. अमेंडिंग पावर के बियॉन्ड था ये सेकुलर वर्ड ऐड करना, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी बेसिक फीचर था उसका. ये द टर्म सेकुलर हैज नॉट बीन डिफाइंड बिकॉज इट इज वेरी इलास्टिक टर्म एंड नॉट कैपेबल ऑफ अ प्रिसाइज डेफिनेशन. It is one of the facet of the right to equality. Woman is a central golden thread in a fabric depicting the pattern of the scheme in our constitution. I'll repeat this. It is one of the facet, the right of the equality. Woman as a central golden thread in a fabric depicting the pattern of the scheme in our constitution. It means that ये जो right to equality दी गया है सभी को, जो right to equality वो इस तरीके से central thread में woman की गई है, वो किया गया उसको thread को फैब्रिक दैट कि सभी लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए नेशन की, वी हैव गिवन ईच एंड एवरीबडी हैज देयर ओन चॉइस टू चूज इट और टू फॉलो इट. ओके, तो दिस इज व्हाट आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थ्री वर्ड्स. फर्स्ट सोवन, socialist and secular. Now we are democratic and republic. Republic, first we are going to understand what does it the republic mean. Republic means democratic polity. Okay, just give me a minute and I need to add a page. Okay, republic word, we are going to understand what does the republic word mean. Republic, here the republic, a democratic polity, there are two types, monarch or republic. In monarchy, the head called, उसको हेड को क्या कहा जाता है, डायनेस्ट कहा जाता है, जो कि हियरार्कियल होता है कि एक पर्टिकुलर फैमिली से ही उसको जो हायरिंग होगी, जो हियरार्कियल होगी उसमें से उसको डायनेस्ट यानी एज अ किंग के तौर पे चूज कर लिया जाएगा और वी कॉल इट किंग. बट इन रिपब्लिक स्टेट में इस तरीके की हियरार्की नहीं होती है. द पर्सन इज कॉल्ड द इलेक्टेड पर्सन होता है. द हेड ऑफ द स्टेट इज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. That we are electing the PM. The head of the state is the president. President is elected. अब it depends कि president is elected directly or indirectly. There are two types में. तो India has a parliamentary form of government. In the parliamentary form of government, we have chosen the indirect parliamentary system. There is no direct democracy in our country. It is an indirect democracy. In direct democracy, the people have chosen all the rights. For example, if we are going to make law on, for example, like criminal act, we are going to want to frame it or we want to make it. So the draft has been made by the few peoples and then it has been publicly available कि भाई उन्हें वोट करना है, अब बताओ कि ये सही है या उसके जो प्रोविजंस वगैरह बताओ. बट लेकिन इंडिया व्हाट इज, वी हैव चूजन द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इन विच the people have chosen among themselves a few representative of their, they are going to sit in the parliament and they are making laws on their behalf. वो हमारे behalf पे laws बनाते हैं. We are not going to have we are not going to be direct voting on that frames or the statutes or acts framing में. So we have chosen the indirect part of the democracy. That is the word republic here mean is that. Okay. Republic means there are two more things. That is, one, there is a political sovereignty in the people of the country or the people of the state. No single individual has a right to become a king or to the governed. Second one, in the absence of any privileged class, hence all public offering being open to every citizen without any discrimination. That is,
कि all of the people have given equal rights and opportunities. All the public services are available to all people, irrespective of anything else. Irrespective of that, there is no discrimination of any kind. So सारी पब्लिक फैसिलिटी सभी के लिए अवेलेबल रहेंगी और किसी भी तरीके का हिरार्किकल सिस्टम नहीं होगा, सभी इलेक्टेड चीज़ें होंगी. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू वर्ड विद डेमोक्रेटिक. व्हाट डज इट मीन डेमोक्रेटिक? What does the mean democratic means? Okay, I just need to clean this now. Going to understand what the word democratic. The word democratic, it means that the government is chosen by the elected representative. Government is based on the consent of the people or the mandate of the people. There should not be any kind of hierarchical or hierarchical system, है ना. गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल और द मैंडेट ऑफ द पीपल, कि लोगों के मतदान पे डिपेंड करती है कि किसकी गवर्नमेंट होगी, कौन बनेगा हमारा हेड, कौन हमें गवर्न करेगा. All the powers of that head as well being limited or abide under or confined by the constitution, because if it is not, uski powers, uski limitations, if it is not mentioned in the constitution, then it means that the democratic government which has been formed, it becoming or turning over a period of time into the tyranny or despotism, और मीना डिक्टेटरशिप में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर उसको अनलिमिटेड. दैट्स वाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी मैंडेटरी फॉर द पर्पस जो हमने कंसर्न ऑफ द पीपल से, मैंडेट ऑफ द पीपल से जो भी इलेक्टेड हेड वी हैव चूजन फॉर दैट टू control him or to control his power, to for the purpose of we has given the right to govern him. For the purpose of that we have framed the constitution in which each and every aspect of that elected head or the person has been written and which must be followed in letter and spirit. That is democracy. डेमोक्रेसी में हम लोगों के द्वारा चूज किया गया पर्सन. इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ, और वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज द ट्राइनरी ऑफ द मेजॉरिटी. यानी जो मेजॉरिटी है उसकी चलेगी. दैट इज द पर्सन इज गोइंग टू रूल अस, गवर्न अस. दैट इज democracy. It is very much important the government should be a legitimate government. What does it mean by legitimate government? Legitimate government means the government which is accepted and have legal rights given by its people or deriving its power from its laws and statute. लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चूज की गई गवर्नमेंट है वो, और उसकी जो भी पावर्स वगैरह है वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन से, स्टैट्यूट से उससे डिराइव की जा रही है. दैट इज कॉल्ड लेक्स रेक्स. लेक्स रेक्स मीन लॉ इज द किंग, कि जो है लॉ है, लॉ में जो लिखा है वही किया जाएगा, वही फॉलो किया जाएगा. लॉ में लिखा है दैट इज वी हैव मेड कि भाई वी द पीपल ऑफ इंडिया गवर्न करेंगे, वी द पीपल ऑफ गवर्न, दैट इज दे आर गोइंग टू चूज देयर ओन गवर्नमेंट, दे चूज टू गिव द पीपल हु इज गोइंग टू गवर्न देम. Law is the king. It is also mentioned the powers and responsibility, the authorities always been derived from that constitution. There is no other person is going to define its power. That is the word democrated here means. Okay, next here we are going to the democratic concept which we have derived from, because we have been ruled by so many years. So 150 years of rules has been, Britishers has ruled on us. तो on this basis we have कि हमें स्वराज चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो हम खुद से बनाए, खुद ही हम उसकी पावर्स को डिफाइन करें और हम ही उसको रूल करने में हेल्प करें कि भाई हमें रूल, आपको हमें गवर्न करना है.
तो सबसे पहला जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था वो यूएसए में आया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। फर्स्ट ब्लू प्रिंट उन्होंने दिया था मॉडर्न डेमोक्रेसी का, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रेम करके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बना करके। तो वहाँ से हमने ये लेके आए थे इस वर्ड को, टर्म को, जिसका मीन था वही कि भाई कंसेंट होना ज़रूरी है पीपल की, उनके बेसिस पे ही एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट को आप फॉर्म कर सकते हो। इसके 4 क्रिटिकल एलिमेंट होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, दैट इज डेमोक्रेटिक के, दैट इज लेजिटिमेट होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज लोगों के द्वारा चूज की गई हो, लोगों ने मानी हो, एक्सेप्ट भी किया हो उसे, ठीक है। पावर उसकी कॉन्स्टिट्यूशन से या उसके लॉ स्टैट्यूट से ड्राइव होनी चाहिए, जस्टिस एंड फ्रीडम। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी जो कि जस्टिस और फ्रीडम, यानी इसका काम होगा जस्टिस देना और फ्रीडम प्रोवाइड करना सभी प्रकार की टू उसके उस देश में रहने वाले लोगों की उसको, एंड उसकी जो पावर होगी उस सारी की सारी ड्राइव की जाएगी फ्रॉम द प्रॉपर स्टैट्यूट, सो दैट इट डज नॉट गिव अफेक्ट टू द और द मेक और कन्वर्ट इनटू द ट्राइनिंग, इसके मैंडेट पे डिपेंड हुए। दैट इज ऑल अबाउट द वर्ड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है, इसमें प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंस होंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी, उनकी आंसरेबल होंगे, अकाउंटेबिलिटी राइज की जाएगी, तो दिस पावर, तो कुछ पावर्स हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं, ये सब चीज़ें इसमें कंक्लूड की जाएंगी। नेक्स्ट आफ्टर दैट, ओके, we are going to discuss, we have completed what, we have discussed the source of authority, we have discussed all its nature. Nature means socialist, secular, democratic republic and sovereign, that is the nature. We had discussed in very detail all those parts. Now we are going to discuss about the next element, it is objectives. These are the 4 objectives of the Constitution of India. These are the 4 objectives. That is justice, equality, liberty and fraternity. So now we are going to discuss about justice. Justice. Justice, there are 3 types of justice: social justice, economic justice and political justice. Social, economic, political justice. We are going to discuss them, each of them here. Okay. Social justice. What does mean by social? Social justice means that we should give in all the people equal rights and opportunities for their development and growth. So जैसे में fair, we have giving all the people of India, that is giving all equal opportunities and resources for their personal growth and development के लिए, that is fair and equitable. Economic resources, that fair and equitable distribution of wealth and income in society. And political justice, fair and equitable participation of all the people in the political process. So I hope सोशल में क्या है कि हम सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं इक्वल लेवल पर, जिससे कि वो अपनी ग्रोथ कर सके और नेशन की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन कर सकें। इकोनॉमिक, सभी को रिसोर्सेज इक्वल ही बांटे जाते हैं जिससे कि सभी रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करें, सबके पास रिसोर्स हैं, और वी आर ट्राइंग टू ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, हैव्स एंड हैव्स नॉट्स। पॉलिटिकल, सभी को पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का राइट दिया जाता है। देयर इज नो वन एल्स हैज बीन एक्सक्लूडेड on anything else. For example, we have a universal adult franchise in which each and every individual has given the right to vote or to choose their representative. Even India is the first country which has given the rights to vote to the women as well. Not any other Europeans or the Western world has given it. So India is the first one who has given the rights to women first time to vote.
There are the three types of justice we have given understand here. Some of the few examples of that: ensuring that everyone access equal healthcare and education हो उनके पास में, हाउसिंग फैसिलिटीज हो सबके पास में ना, फ्री वेजेस हो, किसी भी तरीके का वेज डिफरेंस नहीं हो मैन एंड वुमेन के लिए, है ना, प्रॉपर टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेबिलिटी हो, यूनिटी हो सभी के बीच में, अलग अलग डिफरेंट लोग डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों में, एंड सबके पास वर्किंग राइट्स हो, सबके पास काम हो, सबको काम देना, दैट इज ऑल्सो वी एन पार्ट ऑफ द जस्टिस. Justice is not something which has been decided. Just give me a second. Justice is something not being decided in a particular sense, or we have said that justice has been evolved over a period of time on the basis of the circumstances as well, situation, time, and being or the perspective of the people as well. It is not something which has been already been said and which not been changed or something like that, because जस्टिस जो दिया जाता है, जस्टिस जो भी है वो क्या है, वो इवॉल्व होता रहता है लोगों के साथ, लोगों के माइंड के चेंज होने के साथ, वक्त के साथ में. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. कंटेम्प्रेरी टू जस्टिस हमेशा कंटेम्प्रेरी टू वो टाइम रहता है. तो हम सर्कमस्टांस के बेसिस पर, के चीज़ों के, लोगों के पर्सपेक्टिव के बेसिस पर कि भाई हम किस कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंट में है, उसके बेसिस पे जस्टिस होता है. ओके, तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस कि दैट्स फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू एग्जांपल गिविंग दिस कि जस्टिस का एग्जांपल इकोनॉमिक्स अगर रिलेट किया जाए, दैट इज हम पहले सोशलिस्ट पॉलिसी फॉलो करते थे. इंडिया इज गोइंग एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ इंडिपेंडेंस सोशलिस्ट फॉलोइंग द पोस्ट सोशलिस्ट पॉलिसी, एंड देयर इज नो ग्लोबलाइजेशन एंड वी आर नॉट अलाउड द अदर फॉरेन कंट्रीज to come into India to sell and export. We are excluding ourselves, or we are living in a shackleton. But due to the in the times where we required कि भाई we need to connect the world, we need to enter into geopolitics, and we need to be enhance our strength and capabilities and self-reliance. So we need to understand that India need to enter into contract arrangement treaties with other countries. So for this we have introduced the LPG reforms. तो that is justice कि भाई सबको equal rights and opportunities दी गई growth करने के लिए, LPG reforms लेके आके. Now the three main elements of it, that is liberty, equity and fraternity. These are the main elements. Without each of them, in the absence of any of them, the function, they are not functioning properly, and the system will definitely gonna to collapse it out as well. So without liberty cannot be divorced from equality and fraternity, and equality cannot be divorced from liberty and fraternity, and each should be in a holistic or a combine of each other. They cannot be diverted or restrained from each other, है ना. इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, इन तीनों का एग्जिस्टेंस एक साथ है. अब आता है दैट वी गोइंग टू डिस्कस लिबर्टी. लिबर्टी किस चीज़ की, हमें थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिबर्टी. लिबर्टी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्ड लिबर्टी एंड फ्रीडम. वी कैन नॉट बी यूज बोथ ऑफ देम इंटरचेंजेबली. Liberty is, freedom is absolute terms, absolute terms में यूज करती है. ये आपके रिलेटिव टर्म्स में. एब्सोल्यूट मीन कुछ भी कर सकते हो, एवरीथिंग इज अलाउड, कुछ भी रिस्ट्रेन नहीं है यहाँ पर फ्रीडम में. बट लिबर्टी मीन्स देयर इज अ फ्रीडम बट रिस्ट्रेन्ड फ्रीडम है. द फ्रीडम इज रिस्ट्रेन्ड, रिस्ट्रेंट है आपकी फ्रीडम, रिस्ट्रेंट है आपके राइट्स, रिस्ट्रेंट्स हैं आपके राइट्स. तो वॉट एवर इट इज रिस्ट्रेंट, इट रिस्ट्रेंट टाइप की जो फ्रीडम दी गई, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, दैट टर्म वी यूज लिबर्टी. लिबर्टी मीन्स, हाँ, लिबर्टी इज द, बट लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री रिस्ट्रेंट. लिबर्टी क्या है, एब्सेंस है आर्बिट्री रिस्ट्रेंट का. यानी जो भी रिस्ट्रेंट लगाने वो आर्बिट्री फॉर्म में नहीं है, रैंडमली कुछ नहीं लगाए देने, सब देयर रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, रीजनेबल चेक्स के बेसिस पर रिस्ट्रेंट लगाए गए हैं, दैट इज, और ऑन द बेसिस ऑफ विच आपको फ्रीडम दी गई.
किसी भी तरीके की ऐसी रिस्ट्रेंट नहीं है जो कि आपके पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे। तो ये आपको क्या है, आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में किसी भी तरीके का रिस्ट्रेंट नहीं बन रहे, कंस्ट्रेंट नहीं बन रहे, दे आर नॉट लेगिंग यू बिहाइंड फ्रॉम समथिंग। दिस इज कॉल्ड लिबर्टी। लिबर्टी के 2 एस्पेक्ट्स हो गए, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट। नेगेटिव एस्पेक्ट्स में कंसीडर कहते हैं कि भाई आर्बिट्री नहीं है कुछ भी, आर्बिट्री नेचर का, सॉरी आर्बिट्री नेचर नहीं है किसी भी तरीके के रिस्ट्रेंट का आपका, आर्बिट्री नेचर नहीं है, और पॉजिटिव है जो कि आपको पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। That is going to help you out in personal growth and development. तो लिबर्टी आपको इन एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं दी गई है, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में होती तो उसे फ्रीडम कहा जाता है। वी हैव यूज्ड द वर्ड लिबर्टी, इट इज द फ्रीडम हैज बीन गिवन इन अ लिमिटेड और रिस्ट्रेंट टर्म, बट इट डज नॉट अफेक्टिंग योर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. We have given all the citizens of India or the people of India, that is, they have a right to thought, express, belief, faith and worship, which has been enshrined in the principles of the fundamental rights in the part 3 of the constitution, which is enforceable by law hai, and you can, which is enforceable and protected by the laws hai, or the supreme courts or the our courts of the India. But on the contrary, there is a reasonable restriction that it should not be affect the unity, integrity of the nation, the territorial integrity of the nation की, है ना, उसकी खुद की भिन्नता और उसकी अखंडता को खराब ना करें, दैट इज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को अफेक्ट ना करें. इस तरीके के रिस्ट्रेंट्स हमने लगाए हैं कि जो जिस रिस्ट्रेंट्स कुछ इस तरीके से हैं जो कि इस सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें हमारी कंट्री को. तो आई एम कोटिंग सम फ्यू लाइन्स फ्रॉम द B.R. Ambedkar ji, that is, political democracy cannot be lies at the base of social democracy. Only political democracy, if we are giving the people only the political democracy, that we are giving only the civil rights, that is, you are allowed to vote or universal adult franchise, you have your fundamental rights and you have certain rights and duties as well. So it does not be लास्ट अनलेस जब तक कि सोशल डेमोक्रेसी में, सोशल डेमोक्रेसी वी हैव द इक्वलिटी नहीं होगी, लोगों की भी इक्वलिटी नहीं होगी, हैव्स और हैव का गैप बहुत ज़्यादा होगा, वाइडर गैप होगा, अगर रिच पुअर में गैप ज़्यादा होगा, सबके पास एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगी प्रॉपरली, है ना, सबका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वो अवेलेबल नहीं हो. तो सोशल डेमोक्रेसी के विदाउट द सोशल एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी वी डोंट हैव अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे, वी कैन नॉट बी एबल टू अचीव इट. Democracy means a way of living which recognize 3 terms: liberty, equity and fraternity, which cannot be separate because they are the trinity or they are the part of each other. So without which we cannot be diverse any of them. Liberty cannot be diverse from equality, and equality cannot be diverse from liberty, and non-liberty and equality diverse from fraternity. Because without fraternity or brotherhoodness feeling, there is nothing existed, because there is always a hostility created in the people among themselves. Okay, the freedom here, we understand what is the difference between the liberty and freedom, and we understand why the term has liberty been introduced in our assignment, okay, in our preamble. One of the case, that is the case Puttaswamy versus Union of India 2012 writ petition, in which the former Chief Justice of India has been replied in, that is, what does the liberty means. The notion that liberty only consists of freedom from restraint does not complete the universe of डिस्कोर्स. दैट की लिबर्टी का मतलब ये है कि भाई फ्रीडम दी गई है, आपको कुछ रिस्ट्रेंट्स है, फ्रीडम दी गई है विद सम रिस्ट्रेंट्स के साथ में, सम रिस्ट्रिक्शंस के साथ में. लिबर्टी सिर्फ इस दायरे के ही अंदर नहीं है. लिबर्टी इज नॉट ओनली बी इंक्लूडेड और बी discuss on this only, but liberty has a broader cognizance or the broader term which has been need to be understand, that it gives the individual with all the capabilities and freedom to the fullest degree for their own growth and development, or for the purpose of own growth and development by way of, by providing social economic
है ना, facilities and or removing all those social economic barriers like education is not being allowed to for particular religion, that is this kind of restriction, and removing untouchabilities and making availability of all resources to all these people, or removing all those hurdles for the purpose of providing the opportunity or the growth perspective, that is important for our liberty also include this discourse as well. There is an art, we are going to be discuss more about this in article 21 in the right to liberty. Now we are going to discuss about the term equality, equality of status. Here it is, equality of status and opportunity, equality of status and opportunity, promote among them all. That is, we are going to discuss this. Equality, equality, there are two types of equality, absolute equality and proportionate equality. इक्वलिटी आपकी टू टाइप्स की होती है, दैट इज एब्सोल्यूट एंड प्रोपोर्शनेट. ओके, एब्सोल्यूट और प्रोपोर्शनल इक्वलिटी. एब्सोल्यूट इक्वलिटी ये आपकी इक्वलिटी हो गई. प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी इज नोन एज इक्विटी. Equity, it means that equals must be treated equally and unequals must be treated equally. What does it mean? I will help you to understand. That is means that we are giving resources, we are giving okay, here we are giving to all equal opportunities for growth and development. For example, we are going to watch we have been going to watch a match in a stadium. Okay, so for all this we have arranged a seat at equal level, at equals level. In whole of the program there is no upper levels, there we are going to equal levels. But the point is that, and the back of it, the point is that when we are going, I'm going to make a picture over here, that is one making this, and each one is standing over here to see. But those who are kids, those who are short in height, those who are stunt people, they are not able to see the match properly. But in equality, but we are giving the equal stature, we are from equal pedestals for all the peoples to stand over there and see the match. But in equity we are giving extra efforts or making giving extra efforts to those who needs the most. For example, here the kid need the higher pedestal to see the match because of its low height. But the normal people, normal man who has been developed, a proper fully grown man doesn't need that much height to get. तो it means equality का मतलब है कि हम सबको एक जैसा दे रहे हैं, लेकिन इक्विटी का मीन्स है जहाँ हमें अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट करने की या एक स्पेशल एडवांटेज देने की जरूरत है फॉर द पर्पस ऑफ देयर ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट के लिए. वी आर प्रोवाइडिंग देम दैट. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव इनेक्टेड द जुनेवाइल एक्ट, वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट हैज बीन फॉर्म्ड, POSCO Act has been formed for the purpose of giving rights, for the purpose of safety of the women's के लिए. So we have framing such kind of laws and acts which are giving the benefits to other people. We have formed the Autocracies Act in which any kind of untouchability has been seen or performed for against any of the people, it has been punishable. So we have following the term equity rather than we are following the term equality. Okay. तो इक्विटी मीन्स सबको एक जैसा ट्रीट नहीं करना, जिन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स की या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की जरूरत है, गिविंग देम फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द इक्वलिटी इन अमंग द सोसाइटी और फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग सोशल हार्मनी इन दैट. Next, after that is the fraternity. Fraternity is a very easy one. Fraternity is to be understood the spirit of brotherhood, भाईचारे की भावना लोगों में, the spirit of brotherhood and the promotion of which is absolutely essential in the country.
which is composed of people many races, because the feeling of the brotherhood is very essential and part and parcel and the important aspect of it, because we are living in a country which have its so diversity in religious, linguistic, ethnicity. We are composed of the so much diverse people with the different cultures, traditions as well. So for the purpose of them to maintain the social harmony and the unity and integrity of the entire nation, we has introduced, or we have take third aspect, that is fraternity. For this, to bring the fraternity, we have the first abolish, we have initiated for this purpose. Article 17 has been introduced, abolition of titles has been introduced. Article 18, for the purpose of increasing the feeling of the fraternity among the people. If these articles has not been presented, then we will be doomed after that. Next, the main or the important question is that is going to be arise, that क्या preamble को amend किया जा सकता है, whether the preamble is amendable or not. And the second question most important है, क्या preamble is a part of the constitution है या नहीं है. These are the two main questions which is need to be understand कि भाई preamble को amend करके 3 words add किए गए थे, socialist, secular and integrity. तो we are going to check the validity of these amendments and और क्या preamble को constitution का part माना जाता है या नहीं. So we are going to discuss here the 3 cases, that is first Keshav Nanda Bharti case, which is state of Kerala, that is 1973, again with Berubari case 1960, LIC of India case 1970. Okay, I will write and mention it on the page, help you out to get. Okay. Berubari case 1960, Keshav Nanda Bharti case. These are the basic initial cases which is need to be understand if you want to understand the Constitution of India. 1973, LIC of India case. 1995, and SR Bomai case. Just learn these cases by heart. 1994. Okay. Now we are discussing. क्या preamble amendable है? Yes, preamble is amendable, but it doesn't change the फैब्रिक को चेंज नहीं करना चाहिए, उसके जो मेन फीचर्स है उसके हैं. preamble amendable है, no doubt in that. Yes, preamble is amendable, but it doesn't change the basic fabric of the constitution. Basic structure or a doctrine of the constitution should not be changed. That हाँ, आपको उसका बेसिक डॉक्ट्राइन या बेसिक जो है वो चेंज नहीं, दैट इज कि भाई इन ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, भाई हम सेकुलर स्टेट है, हम सोशलिस्ट स्टेट है, इट शुड नॉट बी, हम सॉवरेन स्टेट है, हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, हमारी लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, ये चेंज नहीं होना चाहिए. हम रूल बाय लॉ के द्वारा चलते हैं, दैट इज दिस फैब्रिक शुड नॉट बी चेंज्ड. बट changing only the preamble without changing the constitution is wrong, because preamble is the summary of the constitution. Preamble is not the initial pages of the constitution, it is the summary of the entire constitution. It has been adopted after the framing of the whole of the constitution. So if you are changing the preamble without changing or major effect or changing that aspect in the constitutional spirit or constitutional articles, so it is useless, it is worthless, it has no point in it, because preamble is the summary of the constitution. Then after we are going to discuss kya it is a part of the constitution ka part hai. Yes, it is a part of the constitution. In the Berubari case, the judges has been said that preamble is a key to serve to open the minds of the founding framers of the constitution. It helps us to understand what they have dreamt and what they wanted to be meant. Preamble, it is never be the source of the power to comfort. Same it is equally true about the prohibition and limitations which has been imposed on it as well.
तो प्रीएम्बल से कोई भी पावर ड्राइव नहीं की जाएगी। प्रीएम्बल किसी भी तरीके के लिए आपका जस्टिसिएबल नहीं है, ना ही इन्फोर्सिएबल है। ओके, प्रीएम्बल इट इज़ हेल्प करेगा आपको ये जानने के लिए कि भाई हमने क्या ड्राइव किया था, व्हाट इज प्रीएम्बल। बेरुवारी केस में it is stated that after all these judgment, after all these quotation, Beruvari case it is stated that preamble is not a part of the constitution. In Keshavananda Bharati case, in LIC of India case, that is Keshavananda Bharati, LIC of India and SR sorry, the judges had decided that Keshavananda Bharati case and LIC or SR Bhumi, that is preamble is a part and parcel of the constitution, but it doesn't give to powers or drive the powers from it. पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन हम उसे ड्राइव नहीं कर सकते किसी भी तरीके की पावर, और वो जस्टिसिएबल इन्फोर्सेबल नहीं है कि आप कोर्ट में जाकर भाई हमारी लिबर्टी दो मुझे। इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट है, इसे अमेंड भी किया जा सकता है, बट इट शुड नॉट बी चेंज द बेसिक फैब्रिक और बेसिक डॉक्ट्राइन स्ट्रक्चर ऑफ द प्रीएम्बल के बेसिक डॉक्ट्राइन स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक डॉक्ट्राइन स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक डॉक्ट्राइन स्ट्रक्चर जो है, जो कि कोर्ट्स के द्वारा इट इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट बीन स्टेटेड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट हैज़ बीन इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द सर्कमस्टांसेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इवॉल्व हुआ है ऊपर, इवोल्यूशन हुआ है। इसके बेसिक डॉक्ट्राइन कॉन्सेप्ट क्या है? एक तरीके का कॉन्सेप्ट जो है डॉक्ट्राइन है, जो कि इवॉल्व हुआ है, ये किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है आपके। ओके, सो हेयर इट इज़, आई होप यू अंडरस्टैंड कि भाई प्रीएम्बल में क्या क्या जो वर्ड्स यूज़ किए गए उन सब के क्या क्या डिफरेंट व्हाट आर द वर्ड्स हैज़ बीन स्टेटेड इन द प्रीएम्बल और हैज़ बीन अंडरस्टैंडेड इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग फुली टू यू ऑल। एंड preamble's amendment, most important part, that is amended preamble. And now I will give you a summary of whole of the topic we have discussed today here. That is, we have first read the preamble and we understand its four date of enactment, source of authority क्या था, nature of state, Indian state कैसा होगा, and the last one, objectives of constitution of India. We have read in derive its power from the people of India, nature of a sovereign socialist secular democratic republic, objective justice, liberty, freedom, fraternity and equality. Date of enactment we have studied 26th of August 2011, 26th of November 1949, 26 November 1939, and then after that we have discussed कि preamble is amendable or not, अमेंड किया जा सकता है या नहीं, और प्रीएम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं। वी हैव डिस्कस फॉर दिस बेरुवारी केस, SR Bommai case, LIC case and Keshavananda Bharati case. In three of the cases, Keshavananda Bharati, SR Bommai case and LIC case, preamble is a part of the constitution and preamble is amendable but is not justiciable or enforceable. In Beruvari case, it is preamble is not a part of the constitution. Okay, so here it is for the today's session. I hope you all like it and enjoyed it. So in the next session we are going to discuss about the part 1, that is union and its territories. There are only 4 articles. The session will be short one. I hope you understand it. So thank you for today.